अस्सलाम वालेकुम। मेरी ग्रैंडमदर की बर्थडे थी तो मैंने इसलिए एक आइसक्रीम केक बनाया था उनके रिमेम्बरेंस में और बहुत मज़े का बना था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। Hey guys, what's up and welcome back to another video. Today was my Nani's birthday and in remembrance of her I have made this ice cream cake. So if you want to watch this recipe, keep on watching this video. First, we're going to start by whipping together 6 eggs and 150 grams of granular sugar for 12 to 15 minutes. पहले हम 6 अंडे और 150 grams granular sugar को 12 to 15 minutes के लिए beat करेंगे. You want the texture to be like a ribbon and airy and light and fluffy. आपको इसका texture ribbon की तरह चाहिए, light, airy or fluffy. Now that it's done, we're going to remove it. अब हमारे हो गया, मैं इसको remove करूँगी. Now we're going to sift together 125 grams of all-purpose flour. हम करेंगे अब sift 125 grams all-purpose flour and 15 grams of cocoa powder or 15 gram cocoa powder. Now we're going to mix together our dry ingredients. अब हम अपने dry ingredients को mix कर रहे हैं. We're now going to fold in our wet ingredients with our dry ingredients. अब हम अपने wet और dry ingredients को fold करेंगे. This will ensure that your cake is really soft and spongy when you're folding it and no air is lost in between. ऐसा आपका cake बहुत soft बनेगा कि कोई हवा इससे नहीं escape होगी. Now we're going to add in 2 tablespoons of oil. अब हम इसमें 2 tablespoon oil add कर रहे हैं. Over here, I have a 14 by 24 inch rectangular baking tray. इधर मेरे पास एक 14 by 24 inch rectangular baking tray है. I am brushing it with oil. मैं इसको oil से brush कर रही हूँ. I have my batter over here and we're going to pour it into our baking tray. अब मेरे पास इधर मेरा pan है, इसमें मैं अपना baking tray में अपना batter को डाल रही हूँ. और then we're going to spread it evenly और फिर मैं इसको pour pan में evenly spread करूँगी. We are now going to bake this at 180 degrees Fahrenheit for 10 to 12 minutes. अब हम इसको 180 degrees Fahrenheit पे 10 to 12 minutes के लिए bake करेंगे. अब हमारा स्पंज तैयार हो गया और हम इसको ऑयल से ब्रश करें ताकि ये सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे. Now that the sponge is ready, I'm brushing it with oil lightly so that it stays soft and moist. After letting our sponge cool down, we are going to add in our ice cream. I'm using vanilla ice cream and first we're going to clump it up on one side, roll it, and then spread it on the rest and then roll it again. And then we are going to let it cool down in the freezer so that the ice cream doesn't melt. हमने अपने स्पंज को थोड़ी देर कूल होने दिया और फिर हम अब पहले आइसक्रीम को एक साइड पे क्लम्प अप करें, फिर उसको रोल करके बाकी पे डालेंगे, फिर उसको रोल करेंगे, फिर पूरे को फ्रीज़र में डालेंगे ताकि सारी आइसक्रीम मेल्ट ना हो. After chilling our cake for around 15 minutes, we are going to cut off the sides so that it looks neat. अब हम अपने केक के sides को neat करेंगे और ये अभी 15 minutes के लिए chill आया तो अब इसका shape भी सही रहेगा. Over here I have my whipped cream. I'm using Whippy Whip's whipped cream and it's really good. It smells good as well. It smells amazing actually. मेरे पास इधर whipped cream है. मैं use कर रही हूँ Whippy Whip की whipped cream और ये बहुत अच्छी है. And this whips really fast और ये fast whip भी होता है और ये बहुत fluffy भी होती है और बहुत मज़े की. Now we are going to take our whipped cream and spread it over our ice cream cake. Our ice cream cake has been chilling as well, so as a firm shape right now. अब मैं अपनी whipped cream को अपने ice cream cake के ऊपर spread कर रही हूँ और मैंने अभी अपने ice cream cake को chill भी किया था तो इसका अब shape भी firm हो गया.
Now we're going to scrape off the excess whipped cream. अब हम अपनी excess whipped cream को scrape off करें. अगर आपके पास scraper नहीं है, आप कोई भी plastic की sheet use कर सकते हैं या tracing paper, और उसको bend करके ऐसे आप उसको लेके जाएंगे तो फिर वो scraper की तरह work करेगा. If you do not have a scraper, you can take any tracing paper, baking paper, or um, a plastic strip and bend it and scrape it, and it'll act just like a scraper. And a tip you can use is that before scraping it, you have to spray some water on your cakes whipping cream so that it's smoother and it's easier to remove the excess. एक ट्रिक है कि जैसे आप स्मूथली अपने केक को स्क्रैप कर ले कि आप उसको पानी से पहले स्प्रे करेंगे तो फिर स्मूथली होगा. I have some fudge here which I put into a piping bag and I'm just letting it drip on the side of the cake. इधर मेरे पास fudge है जो मैं अपने केक की साइड में drip कर रही हूँ. I have transferred my whipping cream into a piping bag and I am using a closed star nozzle to make a border on the edge of our fudge. मैंने एक piping bag में अपनी whipping cream डाल रही है और मैंने एक closed star nozzle से अपने fudge के side पे एक border बना रही हूँ. Over here, I have some chocolate shavings, which I'm going to lightly drizzle in the middle of our two whipped cream borders. मेरे पास इधर chocolate shavings है जो मैं अपने दो whipped cream borders के बीच में डाल रही हूँ. हमारा आइसक्रीम केक तैयार हो गया और बहुत अच्छा लगा. अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर. मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर फॉलो कर. Bye! Our ice cream cake is ready and looks amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. Bye!